नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. All salutations and greetings of peace upon Prophet Muhammad, peace be upon him, and his noble family members and his companions. And after that, my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, my topic is only few hadith about the Ahlul Bayt. And Ahlul Bayt mean the family members of Prophet ﷺ. Few hadith, and before hadith, only the one verse of Quran, Surah Shura, Surah number 42 and verse number 33. Allah subhanahu wa ta'ala said, "Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba." O beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, ask them, ask to believers, or tell them, I don't ask any recompense, any ajr, any reward, any wages for this teaching of Islam and the messengership and the prophethood. I taught you the kalima, and I taught about the tawheed, about Allah subhanahu wa ta'ala. I don't want anything, any wages, any reward, but the mahabba of my relatives, my kindred. मैंने जो तुम्हें कलमा पढ़ाया है, तुम्हें अल्लाह की तालीम दी है, तौहीद का बताया है, इस पर मैं कोई वेजेस नहीं लेता। सिर्फ एक बात चाहता हूं कि तुम मेरे अहले बैत के साथ, मेरे रिलेटिव्स के साथ मवद्दत और मोहब्बत किया करो। यही कामयाबी है। दिस इज अ सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड एंड द हेयरआफ्टर। इफ यू लव माई रिलेटिव्स, if you love my kindred, then you will be the successful in this world and the hereafter. Otherwise, you have no faith, no iman. And in the hadith, Abbas bin Abdul Muttalib, he is the uncle of Prophet ﷺ. He said, Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu, he narrated, and he said, I said, O Messenger of Allah, when Quraysh meet one another, they meet them with good cheer, but when they meet us with faces void of feelings that we don't recognize. Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu told to Prophet sallallahu alaihi wasallam and asked him, what is the matter? What is problem? Then Prophet sallallahu alaihi wasallam, after listening this, felt extremely annoyed and said, by the one in whose hand is my soul, faith will not enter a man's heart until he loves you. And he was the uncle of Prophet sallallahu alaihi wasallam.
He loves you, O Abbas radiallahu ta'ala. This means the relatives of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Faith will not enter a man's heart until he or she loves you for the sake of Allah, for the sake of His Messenger, and for the sake of my kindred. Otherwise, no faith, no iman. If she loves my relatives, my kindred, then iman will enter in the man's heart. Otherwise, no iman. And the other hadith, this hadith narrated by Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu. And Abdullah bin Abbas means he was the cousin of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah's Messenger alayhi salatu wasalam said, the likeness of my people, of the people of my household, Ahlul Bayt, is the likeness of Noah's ark. If someone sails upon it, he will be granted salvation. And if someone fails to board it, he will drown. हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मिसाल दी है, और जो उस कश्ती में सवार हुआ था वो बच गया था, और जो उससे फेल रहा, जो उस कश्ती में सवार ना हो सका, वो सारे के सारे डूब गए। इवन हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत की मिसाल उस कश्ती की दी कि अगर ईमान बचाना चाहते हैं तो एक ही हल है, लव with my relatives, Ahlul Bayt. And the next hadith, Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, he narrated, I heard Allah's Messenger alayhi salatu wasalam say, every lineage and kinship will be discontinued on the day of resurrection, except my lineage and my kinship. सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे क़यामत वाले दिन, सिवाय आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा रिश्ता, मेरे रिश्ते कायम रहेंगे। वो नस्बी रिश्ता भी है, खून का रिश्ता भी है, ब्लड रिश्ता भी है, और वो नबी और उम्मती का रिश्ता भी है। सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, हमारा अपना रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नबी के साथ जो हमारा उम्मत होने का रिश्ता है वो कायम रहेगा, और जो कि उनके रिलेटिव, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's relatives, this relation will be not disconnect. And next hadith, according to Jabir radiyallahu ta'ala anhu, Allah's Messenger alayhi salatu wasalam said, all the sons of the mother have paternal kindred by whom they are recognized, except the two sons of Fatima, for I am their guardian and their paternal kindred. Hassan and Hussein, I am their guardian, and their paternal kindred. Next hadith, according to Umar radiyallahu ta'ala, I heard Allah's Messenger ﷺ say, all the sons of female are attributed to their fathers apart from the sons of Fatima, for I am their guardian and I am their paternal kindred. इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब हसन और हुसैन पैदा हुए, where are my son, these are my son, Hassan and Hussein. And next hadith, according to Jabir radiyallahu ta'ala anhu, Allah's Messenger ﷺ said, Allah subhanahu wa ta'ala has assigned the progeny of every prophet to his own lineage, but Allah has assigned my progeny to the lineage of Hazrat Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala. हर नबी की अपनी औलाद होती है, लेकिन मेरी औलाद वही औलाद है जो हजरत अली की औलाद है।
ये ना समझना सिर्फ उन्हीं की औलाद है, हजरत अली की औलाद मेरी औलाद है। अकॉर्डिंग टू अबू मसूद अल अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहली बैती लम तुक़बल मिन्हु। Allah's Messenger ﷺ said, if someone performs a ritual prayer in which he does not invoke blessing upon me and upon the people of my household, Ahlul Bayt, it will not be accepted from him by Allah subhanahu wa ta'ala. नमाजें पढ़ते रहो, जिस नमाज के अंदर अल्लाह के नबी का जिक्र और उनके अहले बैत का जिक्र नहीं किया, वो नमाज कबूल नहीं होगी। It will be not accepted. An Uzaifa radiyallahu ta'ala anhu, Allah's Messenger ﷺ said, this angel never descended to the earth before tonight. One angel came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam with a good news, and Prophet ﷺ told to Sahaba, this angel never came before. The first time he came to me. Especially, he came tonight and he sought his Lord's permission to greet me with the salutation of peace. Special salam कहने के लिए आया है और अल्लाह की इजाजत लेकर आया है. And to give me the glad tidings that, what is the glad tidings? What is the good news? He said, Fatima is the mistress of the women of the people of the garden of the paradise. Fatima Sayyidatu Nisai Ahlil Jannah. And the Hassan and Hussein are the chieftains of the youth of the people of the garden of the paradise. Sayyida Al-Hassan wal-Hussein Sayyida Ahali Shababi Ahlil Jannah. In the special hadith, Prophet ﷺ said. And according to Ali radiyallahu ta'ala anhu, he entered the presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He had spread a wrapper, so he himself and Fatima and Ali and Hassan and Hussein sat on it. Then Prophet ﷺ grasped to the corners of the wrapper and pulled it over them and tied the corners into the knot. Then Prophet ﷺ said, O Allah, be well pleased with them. Yes, I am well pleased with them. ऐ अल्लाह तू भी इनसे राजी हो जा, क्योंकि मैं भी इनसे राजी हो गया हूं. अली वो हैं जिनसे अल्लाह का रसूल राजी है, फातिमा वो हैं जिनसे अल्लाह का रसूल राजी है, हसन वो हैं, हुसैन वो हैं जिनसे अल्लाह का रसूल राजी है. और इसको मुकाबले पे यजीद को लाएं, नाउज़ बिल्लाह. अल्लाह रब्बुल इज्जत give us tawfiq to understand Quran and Hadith and the shan of Ahlul Bayt and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah guide us on Quran and Hadith. Wa ma alayhi al-balagh. Pray for Sunnah.